Sukhdev Gandhi I am, and you are watching my YouTube channel Gandhi Sir. So as usual, today I talk about the importance of multiple choice question and help you in solving multiple choice questions single answer. And this video is helpful for PTE students, even IELTS as well. Why? Because this multiple choice question single answer is always in IELTS and PTE. Now, what is the technique of solving? Technique remains same always. So I just only advise you spend 10 or 15 minutes in understanding the whole lecture. Thereafter solve assignment. You solve hundreds of questions, that doesn't matter at all. But once you know the technique of solving the questions, you can easily attempt the questions also. So we started today's lecture on importance of or how to solve the techniques. I tell you how to read passage or paragraph or how to read questions and what is the way of understanding the question. And I hope that this video will be liked by you, focus and spend complete time in understanding what I'm going to say. See, just watch here itself on the screen. I'll share each and every slide over here and make you understand. Right? Let's start. Now, this is the first step, how to read paragraphs. Right? It means in order to solve any question, multiple choice, single answer, you first of all, you must understand what is the way of reading paragraphs. Because most of the students, they do not know actually what is the way of reading paragraph. They start reading paragraph, they match the words in the multiple choice question and place the answer. So which is absolutely a wrong way. So let me start from the very first paragraph. See on screen, if you see, this is one paragraph. Red, black and red, I have marked it. Now, what is actually the way of reading this? There are three steps that you consider always when you read paragraph. Always first 2 or 3 lines are the main idea of that paragraph. Main idea means it tells you about what it is talking about. अगर आप पहले 2-3 लाइनें पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा कि क्या एक्चुअली में राइटर इज गोइंग टू मेक टॉकिंग ओवर हियर, उसने क्या यहां पे बात करनी है. उसके बाद है ब्लैक पार्ट. What is that? This is called logical expression. Logical expression means what is the main idea? Explanation of that main idea is in the middle part of it. This is called explanation. अभी explanation पढ़ते हुए उसके बाद है last में, of course, the concluding part of it. What is that concluding? It's the ending part of it, which speaks about the whole paragraph. Now, what is this? Jupiter has 2.5 times more mass than all the other planets on the solar system combined and is 11 times as large as Earth in diameter. Now, from these 2-3 lines, we come to know what is that it is talking about what? It is talking about the Jupiter. And what is talking about? Talking about the advantage of Jupiter as large as Earth in diameter. So here the concept is clear that it is talking about Jupiter. It is talking about Jupiter advantage. It is talking about Jupiter mass. Now see, next lines. Jupiter is so large that scientists believe it almost became a star. Now see here, it is talking about the explanation of the Jupiter. As the gases and dust contracted to form the planet, gravitational force created tremendous pressure and the temperature inside the core. Now see, if you understand this, understanding this means it is talking about again explanation of what? Explanation of the Jupiter. So it is very well clear. आप कोई भी paragraph उठा लें, any paragraph you pick up, this is a technique that first is talking about main idea, then it is talking about explanation of that main idea. Explanation of that main idea is stated as a logical expressions, right? So logical expression means it always gives answer in the form of reasoning, clear? And it's a step by step also. Now see, but there was not enough. Now see, but. So when the words like but, however, nevertheless, must focus and concentrate and mark it, because these words are the negative
qualifiers which change the sense of the previous lines also. So here you must be very careful about it. There was not enough mass available to create the temperature needed to start a fusion reaction such as that of the sun. Now, another thing that you watch, see how I am understanding the passage, how I'm reading the passage. Do not read passage like Jupiter is so large that scientists believe that. Always read five words, understanding those 5 words and move to the next 5 words, right? Such as that of the sun, Fahrenheit, or this Celsius at the sun's core. Now see, last, thus Jupiter has been. अब ये जो 3 लाइनें हैं, it starts from result, thus, hence, therefore. So if you come across this kind of words, it means it is showing what? It is showing the result of the whole paragraph. Hope it is clear to you ki what is the way of reading paragraph. Now let's see, move to the next. So always I just do not listen in between or do not leave in between, because you won't be able to understand now. अभी तक मैंने ये समझाया कि पैराग्राफ को पढ़ने का तरीका क्या है. पैराग्राफ को 3 हिस्सों में पढ़ना है. पहले लाइनों को मेन आइडिया, दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशंस और थर्ड इज रिजल्ट. इस तरीके से आपको सोचकर, मतलब दिस इज द बेसिकली योर मेंटालिटी ऑफ रीडिंग, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड, राइट? Now, if you're a PTE student, type of questions in reading single answer paragraph, what kind of a questions could be in a exam? It means अभी तक मैंने सिखाया कि किस तरह से आपको पैसेज पढ़ना है. अब मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन को रीड करने का तरीका क्या है और क्वेश्चन जो है वो किस टाइप में होगा. इस टाइप में होगा. The passage is mainly about the main purpose of the passages. The content is primarily about the central idea of the passages. The paragraph mainly infer about which of the following most accurately main purpose of the passage. It means what? Means अगर आप देखें सबका theme एक ही है. Means what have you? You have to understand and pick out the theme or central idea of the passage. Once you have understood how to make a theme of that paragraph, you will be able to come to know how to answer the question. Right? Now, technique, do's and don'ts. Before I tell you about how to read the question, पहले बताऊं कि मैं किस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको बताऊं कि do's and don'ts क्या हैं. Do not find the exact line from the paragraph which is given in the option. It means अगर options के अंदर आपको एक लाइन दी हुई है और सेम लाइन आपको पैराग्राफ में ली हुई है, do not find, because that is not the answer, that is just a confusing and that must not be, right? इसको आप do not reject those line first which is given in complex form. आपको अगर कोई लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है, मींस रीजनिंग बेस्ड दी हुई है कोई, उसको पढ़ें ध्यान से, उसका मीनिंग समझें ध्यान से, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, बिकॉज इट गिव्स यू एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन आइडिया, राइट? नाउ व्हाट इज डू? क्या करना चाहिए अब? व्हाट शुड बी डन? दैट्स अ डू ट्रिक्स. ये सब आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन समझना है. व्हाट इज आस्क्ड, पूछा गया. मैं आपको आगे बताऊंगा उसको समझने का तरीका भी क्या है. Understand main idea, of course, as I told you on the first screen, कि जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो आपको मेन आइडिया समझना है. मेन आइडिया मींस आपको पहले 3 लाइनों का थीम क्या है वो समझना है. अंडर लॉजिकल डिस्क्रिप्शन मींस यू मस्ट, उसके मेन आइडिया के नीचे लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. और वो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या वो मेन आइडिया को डिपिक्ट करती है, मेन आइडिया को बताती है? यू हैव टू थिंक दिस. See negative quantifiers. आपको ये negative quantifiers हैं, but, however, nevertheless, rather than, in spite of, nonetheless. ये क्या है? ये जैसे ही word these kind of means quantifiers का, आपको ये ध्यान रखना है कि पिछला जो सारा passage का line है उसका meaning जो है वो change हो सकता है. Extract the theme of the paragraph. आपको पूरा extract करना है paragraph का theme क्या है. मीन्स उसके अंदर बात राइटर ने क्या बार बार उसके ऊपर बात की गई है. दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट द थीम ऑफ द पैराग्राफ. रीड ऑल ऑप्शंस वन बाय वन. एक ऑप्शंस बाद में पढ़नी और नॉट ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज. एंड यूज एलिमिनेशन मेथड. आपको चूज नहीं करना है, यू आर सपोज्ड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. अब मोस्टली आंसर किस फॉर्म में होगा? आई एम टॉकिंग अगेन एंड अगेन मेन आइडिया. वो जो मेन आइडिया है, अगर आपने उसको समझ लिया, understood, it means if you have understood that main idea, उसकी paraphrasing
जो है वो आपकी ऑप्शंस में ज्यादा चांसेस हैं कि हो। पैराफ्रेजिंग, आई ऑलवेज टेल कि जो मेन आइडिया के अंदर मीनिंग है उसी मीनिंग को दोबारा से डिस्क्राइब किया होगा, दैट स्टेट्स टू द मेन आइडिया, तो मोस्टली आंसर जो है वो होगा। सो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको मेन आइडिया पढ़ना जरूरी है। इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स, डूज एंड डोंट समझ आ गए हैं, आपको पैराग्राफ समझ आ गया है, मेन आइडिया, easily the techniques you adopt that I'm saying, definitely you make it correct. अगर एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, देखिएगा उसमें कितने ठीक करते हैं देन, राइट। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। अब आपको सामने पैराग्राफ दिया हुआ है, जो मैंने पहले दिखाया था आपको वही पैराग्राफ है, आपने इसको अच्छे से समझना है। नाउ सी, द मोमेंट यू रीड पैराग्राफ, the moment you read paragraph, read the question. The passage is mainly concerned with, I make you conscious here, do not read options here. For God's sake, students do mistake here. It is said, read the question, आप answers भी पढ़ते हैं जो नीचे दिए हुए हैं, and one of the answer is correct, 3 wrong, and it creates confusion. So the passage is mainly concerned with, means passage जो है वो किसके ताल्लुक रखता है, mainly concerned with what? तो मुझे पहले अपना पैराग्राफ समझना है कि इसके अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया। जुपिटर के बारे में बताया गया, जुपिटर की एक्सप्लेनेशन बताया गया, उसको बताया गया कि किस तरह से राइट द गैसेस एंड डस्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू फॉर्म द प्लैनेट, क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद बताया गया लास्ट में, दस जुपिटर हैज बीन कूलिंग डाउन एवर सिंस, तब से वो खत्म होता जा रहा है। Even so, Jupiter radiates about as much heat received from the sun. But you say, I just make you understand by the pointer now. Now see, if you talk about, if you see the but here the pointer is, so when you look at the pointer, but there was not enough mass available. See, when you see this quantifier, these all lines have now lesson importance. Now main thing that starts from here, but there was not enough mass available to create the temperature needed to start a fusion. अब इसका आंसर ढूंढना है ना, व्हाट इज द टेक्निक। अब मैं पहले पे आऊंगा, ए ऑप्शन, द साइज ऑफ जुपिटर रिलेटिव टू अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। नो, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ द जुपिटर रिलेटिव टू अदर प्लैनेट्स, तो मैंने ये ऑप्शंस कट कर देनी है। डिफरेंस बिटवीन सन एंड जुपिटर, नो, इट इज नॉट टेलिंग एनीवेयर कि सन ये है और जुपिटर ये, नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस। हाउ जुपिटर्स मास हैज अफेक्टेड इट्स डेवलपमेंट, कि किस तरह से जुपिटर का जो मास है अफेक्टेड डेवलपमेंट, इसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट होता है। यस, इट इज टॉकिंग अबाउट जुपिटर्स मास। इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर 2.5 more mass than the other planets, it means talking about, and 11 times as large as Earth in diameter, it means understood from here it is talking about Jupiter's mass. क्या effect हुआ its development? Yes, see here, it is down here because not enough mass available to create. Thus, result देखिए, Jupiter has been cooling down ever since. It means affecting its development. Okay. So third, definitely the answer is. Let's check fourth one. The temperature at which a planet's core can start a fusion reaction. No, it is not talking about that how a fusion reaction starts. It means मेरी 3 options जो हैं वो negative हो गई हैं, एक positive है. This is the way of thinking multiple choice questions. अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोचना है, द वे इज दिस, देयर इज नो एनी अदर वे, एंड यूज योर नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज वी पीपल आर मोर कैचिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स, राइट। सो यूज दैट नेगेटिव एनर्जी टू फाइंड योर और एलिमिनेट योर आंसर। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, do not choose the answers, always eliminate the options, because it helps you to create the, or you to make up your answer correct. Now if we talk about the next one, it's a self practice. यहाँ पे दिया भी हुआ है, it's all that you can read. I'll just stop here itself, you can read, it's all clear here itself, more mass and how mass is computed, it's a reasoning. See here, as it's a reason explained, आपको इसके बाद self assessment है. Self assessment means the way that I have taught you now, you read, find and mark answer. वो जो आंसर मार्क करेंगे, दैट यू मार्क इन अ कमेंट, आप कमेंट के अंदर डालें। कमेंट के अंदर व्हाट आई डू, आई विल चेक योर कमेंट, डेफिनेटली आई गिव यू द आंसर विद रीजनिंग, कि आपका अगर ठीक है तो अच्छी बात है,
अगर आपका ठीक नहीं है, it means if your answer is incorrect, then I give you the explanation also that why your answer is wrong, so that you can understand well. Hope it is clear to you all, right? बड़े आराम से ध्यान से समझिएगा इसको कि पूरा का पूरा पैसेज मैंने किस तरह से समझाया आपको, किस तरह से रीड करवाया, किस तरह से क्वेश्चन को समझना सिखाया, उसके बाद मेन आइडिया क्या है, then you start exercise. See, what I suggest you, if you are unable to understand, watch video at least twice or thrice to understand the trick or technique. Once you have understood the technique, bring any kind of a question, you can give the answer. So I always suggest you this thing. So let's just self-practice. Now this is self-practice. Self-practice means here I stop for a while. What do? Understand the passage and they give answers. आपको आंसर ढूंढना है. This is the first screen. ऐसे 3 क्वेश्चंस आएंगे. अब आप क्या करें? The moment you see the screen, pause the video, read it effectively, read it focus and see answer. Simultaneously you mark the answer in a comment box. आपको लगे कि आंसर B है तो आप वो B जो है कमेंट में लिखते हैं. फिर उसके बाद सेंड नहीं करना है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं. दिस इज द सेकंड पैसेज. इसको फिर आगे हैं स्क्रीन पर, स्टॉप करें, पढ़ें इसको अच्छे से. Thereafter, what do? Again mark answer, write in a comment. Clear? Then move to the third one. थर्ड पे आ जाएं, पढ़ें इसको अच्छे तरह. अगेन mark answer, what you read, main idea, description and result. अब तीनों को पढ़ने के बाद इसका एक्सट्रैक्ट निकालना है. व्हाट इज दैट एक्सट्रैक्ट? मेन आइडिया क्या है, उसको ऑप्शंस के साथ मिलाकर देखना है कि ऑप्शन कट करनी है, चूज नहीं करनी है. सो व्हाट आई एडवाइज यू, जस्ट फॉलो दोज एडवाइस. Always follow the phrases or negative quantifiers, however, but, right, nonetheless, nevertheless. इस तरह के words को देखिएगा, कहीं तो नहीं आ रहे words. So meaning is changing or meaning remains the same. So quite understanding that is for you, right? Well, this is the end of my session. I'm really grateful to all the listeners, all my subscribers who are constantly in touch of mine or my lectures as well. So I appreciate your comments that you give, and I really feel thankful, and I really feel to improve yourself also. So what I just suggest you, when you watch or when you subscribe, so when you watch my videos, watch it. Thereafter, 1 hour, I sit thereafter every day or alternative days at 6 o'clock, video is uploaded. So when video is uploaded, thereafter you're watching, 1 hour will be given to you for comments, and instantly your comments will be given answer also, so that you can improve as well. So keep watching. Thank you. Bye-bye.